Today we have to continue our paper molecular biology and this is your lecture number 12. Molecular biology रा 12 नंबर लेक्चर के समस्त को वेलकम एंड आज ही हमें डिस्कशन करमा कहार बाबत रे दैट इज अबाउट द आरआरएनए. लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करतला कहार बाबत रे एमआरएनए बाबत रे डिस्कशन करतला एंड एमआरएनए रो काना काना डिफरेंट पार्ट्स दिस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. एमआरएनए रो गोटे छुटिया पर्सन हमर रहि जेतिला तार बाबत रे फर्स्ट आज हमें डिस्कशन कर देमा तापरे विल स्टार्ट फ्रॉम द आरआरएनए सेक्शन. ओके सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फ्रॉम दिस एमआरएनए रो गोटे छुटिया पर्सन जेंटा के हमें डिस्कशन करबार थिला. एमआरएनए हमें जते बेले देखुछु एमआरएनए के दुईटा कैटेगरी रे हमें डिवाइड करि पारमा. The one is your monocistronic and another one that is the polycistronic. Okay, mRNA के दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड करि पारमा. One is your monocistronic, RNA and another one that is polycistronic mRNA. Polycistronic. ओके देखो सब बल्ले मन रखी तो सिस्ट्रोन टर्म टा में कहार लगी यूज करि परसो जीन रो लगी जीन टा में वर्ड यूज करि परमा सिस्ट्रोन. ओके सिस्ट्रोन माने होचे जीन. ओके जीन के हम अदरवाइज कहि परमा सिस्ट्रोन बोली करि कहि परमा. एमआरएनए दैट में बी मोनोसिस्टोनिक और एमआरएनए दैट में बी पॉलीसिस्टोनिक. पहला बुझू and किन टाइप रो एमआरएनए किन टाइप रो ऑर्गेनिज्म रे देखबार के मिलसे दैट वी हैव टू डिस्कस हियर. मोनोसिस्टोनिक माने काना देखो जदी हमर एमआरएनए हला सपोज दिस वन दैट इज द एमआरएनए. ओके एंड अनदर थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर जे वन जीन गुटे जीन काना करसी दैट विल मेक वन प्रोटीन. Okay, generally one gene that will make a single protein. Generally गुटे जीन गुटे प्रोटीन तैयारी करसी. Okay, सेंता मोनोसिस्टोनिक मोनो माने कण वन एंड सिस्टोन माने कण जीन. जदि गुटे mRNA that is responsible for the synthesis of only one kind of protein, then that is called as monocistronic mRNA. सिस्टोन रो काम कण सिस्टोन होचे कण that is the gene. जीन टा कहार पार्ट है डीएनए रो पार्ट है एंड डीएनए नो काना तयारी हला एमआरएनए तयारी हला. एंड इफ दिस एमआरएनए इज रेस्पोंसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोटीन, दिस वन दैट इज योर प्रोटीन. ओके जदी गुटे एमआरएनए रो गुटे टाइप रो प्रोटीन तयारी हला बिकॉज़ वन जीन विल मेक वन प्रोटीन. गुटे जीन गुटे प्रोटीन तयारी करसी है ना. सेंता एमआरएनए जदी गुटे प्रोटीन तयारी करूची बेले से टाइप रो एमआरएनए के काम बोली कि मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए. बिकॉज़ डीएनए रो हमर जते बेले भी एमआरएनए तयारी हला काहर नो तयारी हला डीएनए नो तयारी हला. दिस वन दैट इज योर डीएनए हला. ओके दिस वन डीएनए रो गुटे पार्ट के मैं काना कहूछु जीन बोली कि कहूछु. दिस वन जीन यू गुटे जीन रो गुटे एमआरएनए तयारी हला एंड दिस एमआरएनए इज मेकिंग वन प्रोटीन. That means गुटे जीन रू गुटे प्रोटीन तयारी हला. ओके दिस वन दैट इज द डीएनए एंड डीएनए रो गुटे गुटे पार्ट के मैं काना कहसु जीन बोली कि कहसु. जीन माने काना दैट इज द डीएनए. तो डीएनए रो छुटिया पर्सन दैट इज मेकिंग ए स्पेसिफिक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट जीन बोली कि कहसु. तो इना हमर डीएनए नो आरएनए तयारी हला आरएनए रो काना तयारी हला प्रोटीन तयारी हला. बट गुटे एमआरएनए रो केतरा प्रोटीन तयारी हला गुटे प्रोटीन तयारी हला. वेल दिस टाइप ऑफ एमआरएनए दैट इज नोन एज मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए. ओके तो कहा के हम मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए if the mRNA is making a single protein, then it is called as मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए. तो तके को हमामे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए. ओके सो लेट्स सी हियर. तो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए काना कहला जे सपोज दिस वन दैट इज द एमआरएनए हला एंड एमआरएनए रो गुटे प्रोटीन तयारी हबा
एंड जेतेबेले प्रोटीन तयारी हेसी से टाइम रे हमें जानि थिमा जे प्रोटीन सिंथेसिस गुटे स्पेसिफिक पॉइंट स्टार्ट हेसी जाके स्टार्ट कोडन बोली करी क्वेश्चन जेतेले एमआरएनए रो स्ट्रक्चर डिस्कशन करूथला जे हमर इन हला दिस वन दैट इज द स्टार्ट कोडन दैट इज योर एयूजी ओके एंड दिस वन दैट इज योर स्टॉप कोडन जिन जगह हमर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हेसे ताकि क्वेश्चन हमें स्टॉप कोडन एंड स्टॉप कोडन हला सपोज यूएजी ओके हमर पाके तीनटा टाइप रो स्टॉप कोडन अछि एयूजी यूएजी UAA and UGA and AUG जा होचे हमर कना दैट इज स्टार्ट कोडन and UAG टा हला हमर का कोडन दैट इज स्टॉप कोडन जेन जगह हम प्रोटीन टा सिंथेसिस स्टॉप होछ तो इनो गुटे स्टार्ट कोडन गुटे स्टॉप कोडन अछि एंड एतकी भितरे हमर कना सिंथेसाइज होचे प्रोटीन सिंथेसाइज होचे and this one that is our protein तो जदि हमर मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए है बेले एमआरएनए पाखे केतेटा स्टार्ट कोडन थिबा गुटे स्टार्ट कोडन आ गुटे स्टॉप कोडन थिबा ओके तो एमआरएनए पाखे काना रहला जे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए have one start codon, one start codon and one stop codon. Good start codon and good stop codon. Okay, and this kind of condition or this type of RNA, monocytonic RNA, that is the characteristics features of what? That is the characteristics of the eukaryotic cell. देखो, this is the characteristics where these are found. किन जगह देख पार के मिलसे? For example, these are found. This is found in eukaryotic cell. Eukaryotic cells. केनो देख पार के मिलवा? Eukaryotic cell रो characteristic features. Question is see, the monocystonic RNA is the characteristic features of the dash type of cell. That is the characteristic features of your eukaryotic cell. That means in the eukaryotic cell, the mRNA which are formed that are having only one start codon and one stop codon, that means that mRNA is responsible for the formation of how many protein? That will make a single protein. That type of mRNA that is known as what? Monocystonic mRNA. This is the characters of the eukaryotic cell. Okay. तापरे जब हमें next polycystonic RNA. Poly माने कना? So many. And cystonic what asla keno gene ru asla. Okay, that means so many genes they are making so many proteins. So many genes they will make the so many protein because one gene make one protein. That means many gene will make many proteins. है ना? तो इनो काना कहूचे देखो जदि mRNA suppose this one that is the mRNA हला and mRNA that is making more than one protein. Single mRNA if that is making more than one protein, that type of mRNA is called as polycystonic mRNA. देखो, suppose this one mRNA हला, mRNA रे this one that is our start codon गुटे अच्छे. इटा हला start codon. Okay, and this one suppose this is your stop codon. Stop codon. Then after some distance, again another start codon is there. Start codon. And then another stop codon is there, suppose. Okay. Again, there is presence of one start codon. And here again there is presence of stop codon. ओके तो देखो इनो जिते बेला प्रोटीन तैयारी हबा एतकी रो एतकी गुटे प्रोटीन तैयारी हला दिस वन दैट इज मेकिंग वन प्रोटीन ओके सपोज दिस वन दैट इज द प्रोटीन ए ना दलना इता के प्रोटीन ए एंड दिस इज मेकिंग अनदर वन प्रोटीन ओके इता के दला प्रोटीन बी
this is making a protein. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಲಾಮೆ protein B, protein B, and इतरनु एतकी भितरे गुटे protein तैयारी हला. Suppose ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಲಾಮೆ protein C, protein C. Okay, how these proteins are synthesized, that we have to discuss when we will discuss about the translation. Protein केंद्र करी तैयारी से मैं translation पढ़ला वाले discussion करना, just overall पे जानी था. So this part is making one protein, this part is making one protein, this part is making one protein, right? तो गुटे mRNA रू more than one protein formation हला. More than one protein माने काना? One gene make one protein, that means more proteins माने there is presence of more genes. Okay, mRNA जन DNA नो तैयारी हला, से DNA पाके more than one gene थिला. Suppose, let me take a mitta dama. Is a DNA bana ma. Suppose this one, that is our DNA. Okay, any DNA re more than one gene achi. Suppose this is gene 1 hala, this one that is gene 2 hala, and this one that is your gene 3. Is gene 1 no this part, is gene 2 no this part, gene 3 no this part. mRNA तैयारी हला, DNA नो mRNA तैयारी हला. गुट्टे जीन, okay, गुट्टे DNA रे more than one gene अछि. गुट्टे DNA देखला जे there is presence of more than one gene and that are making one mRNA. mRNA तैयारी करले तो mRNA रे भी काना अछि more than one genes रहला and that genes are making proteins. Okay, जदि गुट्टे mRNA that is responsible for the formation of more than one protein, then that is known as polycystonic mRNA. Okay, तो काना कहूचे, if one mRNA, if from one mRNA more than one proteins are synthesized, more than one proteins are formed, then it is called as polycystonic mRNA. ताकि हमें कहमा polycystonic. देखो, if mRNA is making a single protein, यदि mRNA single protein तो बनाउछे monocystonic. mRNA यदि more than one protein formation करूछे तो ताके कहमा polycystonic. That is the difference. देखो आमे जेतला मोनोसिस्टोन देखुतला सनो काना रहतला गुटे स्टार्ट कोडन गुटे स्टॉप कोडन रहतला बट इन और जन mRNA देखला they have multiple number of start codon and stop codon. Okay, this from this start codon to this stop codon गुटे प्रोटीन, ई स्टार्ट codon नो ई stop codon भितर गुटे प्रोटीन, इनु स्टार्ट हला इनु प्रोटीन सिंथेसिस हला फिर गुटे प्रोटीन तैयारी हला. ओके, तो इन नंबर काना हला, इन नंबर the polycystonic mRNA, the polycystonic mRNA have more than one start codon and stop codon. Start and stop codons. मनकर पाखे more than one start codon and stop codon रहला. That is the difference between the monocystonic and polycystonic mRNA. Okay, तो इना में काना देखला देखो polycystonic mRNA कहा के कहूछु, if mRNA is making more than one protein, that is called as what? Polycystonic mRNA. And in the polycystonic mRNA there is numerous number of start codon and stop codon. Okay, from one start codon to another stop codon, that will make one protein. Another start codon to another stop codon, that will make another protein. So in this way, from a single mRNA, if there will be formation of multiple number of your proteins, then that is called as what? Polycystonic mRNA. And this is the characteristic features of prokaryotic cell. Ita kahar characteristic features hai? Prokaryotic cell mankar characteristic features hai. But monocytonic हमें mRNA जितले देखुछु, that is the characteristic features of eukaryotic cell. But polycystonic mRNA, it is the characteristics of your, for example, this is found in prokaryotic cell. This is seen in prokaryotes.
कहार नु देखबार के मिलसी प्रोकैरियोट्स मन करनु देखबार के मिलसी एटा गला हमर काना दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए एबे हमें जाऊं कहार भीतर के एंटर करमा दैट इज योर आरआरएनए द नेक्स्ट आरएनए दैट इज द आरआरएनए ओके एबे हमें डिस्कशन करमा कहार बाबद रे आरआरएनए बाबद रे डिस्कशन करमा सो व्हाट इज दैट आरआरएनए वी नो दैट आरआरएनए माने काना दैट इज द राइबोसोमल आरएनए राइट अगर डिस्कशन करितिला आरआरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए इधर के मैं कहां ले जो राइबोसोमल आरएनए कहू छु बिकॉज़ दिस इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम काना कहला फर्स्ट लेट मी राइट जे आरआरएनए इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स of the ribosome that's why that is called as ribosomal RNA ribosome रो क्या कंपोनेंट कहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट माने का जे इट इज हेल्पिंग टू मेकिंग द राइबोसोम रो स्ट्रक्चर तैयारी करबार लागि हेल्प कर सके दैट इज योर राइबोसोमल RNA राइट व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बिकॉज़ राइबोसोम बनावर लागि RNA make the ribosome with proteins देखो काना कहला जे आरआरएनए और प्रोटीन्स मिसी करी काना तयारी करसन राइबोसोम तयारी करसन गुटे में राइबोसोम सपोज दिस वन दैट इज योर राइबोसोम हला ओके गुटे राइबोसोम हमें जितले देखुछु तार दुईटा सब यूनिट थिसे एटा के गुटे क्वेश्चन स्मॉलर सब यूनिट गोटे के कहला स्मॉलर सब यूनिट एंड आ गोटे के कहला लार्जर सब यूनिट ओके गोटे राइबोसोम हम जितले देखुछु गोटे स्मॉलर सब यूनिट रहला गोटे लार्जर सब यूनिट रहला एंड इफ यू सी दिस स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट देयर इज प्रेजेंस ऑफ आरआरएनए देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम आरएनए ओके दिस इज वन आरएनए this is one RNA okay and rest जहाँ रहला there is presence of proteins देखो राइबोसोम हम जितले देखुछु देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट देयर इज प्रेजेंस ऑफ आरएनए दिस वन दैट इज कॉल्ड एज आरआरएनए ओके आरएनए प्रेजेंट अछि तार संगे काना प्रेजेंट अछि तार संगे हमर प्रेजेंट अछि प्रोटीन्स माने प्रेजेंट अछि ओके तो आर हमें राइबोसोम हमें जितले देखमा राइबोसोम के काना कहि पारमा राइबोसोम दैट इज ओनली made up of two things ribosome that is the complex of RNA and protein okay ribosome that is the complex of RNA and protein RNA और protein रो complex से कहू हम काम बोली कि ribosome बोली कि कहू and ribosome रे जेन RNA अछि से तक ribosomal RNA कहू ribosome रे अछि बोली कि ताके कहू हम rRNA और ribosomal RNA बोली कि कहू है ना तो आरआरएनए एंड प्रोटीन रो गुड कॉम्प्लेक्स के कहला में काम बोली कि राइबोसोम एंड अप्रोक्सीमेटली 40 to 60% ऑफ द टोटल राइबोसोम दैट इज कवर्ड बाय द आरआरएनए जतले देखु छु दिस वन इडा भी हमर आरआरएनए दिस वन दैट इज योर आरआरएनए दिस वन इज योर आरआरएनए तो राइबोसोम रो अप्रोक्सीमेटली 40 to 60% दैट इज कवर्ड बाय आरआरएनए ओके एंड रेस्ट जहां रहला दैट इज योर प्रोटीन्स रहला ओके तो राइबोसोम रे आरआरएनए एंड प्रोटीन अछि
सेति लगे राइबोसोम के गोटे ना दिया हिचे राइबोसोम के अदरवाइज कहैसे दिस इज आल्सो कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स दिस इज आल्सो कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स देखो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स राइबो माने काना राइबोन्यूक्लियो माने काना राइबोन्यूक्लियो रो माने हला राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लियो माने काना राइबोन्यूक्लिक एसिड माने काना आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड माने काना आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज योर आरएनए राइबोन्यूक्लियो वर्ड में यूज करला कहार लगे आरएनए रो लगे एंड सेना अछि काना प्रोटीन आरएनए एंड प्रोटीन अछि बोली करी राइबोसोम के अदरवाइज काना कहै छै राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बोली करी कहै छै तो हमर जेतले कहउतला जे इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम दैट इज द rRNA is the structural component of the ribosome why it is the structural component of the ribosome because if you see the ribosome there is only two things is there only your rRNA and your proteins खाली RNA अछि and protein अछि and then RNA अछि ताके कहला में ribosomal RNA बोली करी कहला क्लियर ओके तापर जाऊ आउ कना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहला केन टाइप रो RNA काना थि डिस्कशन कर माता पर देखो आमे जेतबेला देखुतला आरएनए सबथुरु मोस्ट एबंडेंट आरएनए सब कहा के कंसीडर करथला दैट इज योर राइबोसोमल आरएनए जतकी भी आरएनए छन सबथुरु अधिक आरएनए केनटा थेसे दैट इज योर राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट थेसे है ना सो दिस इज द मोस्ट एबंडेंट आरएनए rRNA is the most abundant RNA सबुतरो अधिका केन आरएनए अछि दैट इज द rRNA अछि मोस्ट अबंडेंट आरएनए सब एते हम कंसीडर करू छ है ना एंड अनदर थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर एंट्रेंस एग्जाम रे आसी जमर आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए व्हिच आरएनए दैट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए सबुतरो मोस्ट स्टेबल फॉर्म दैट इज योर राइबोसोमल आरएनए इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए it is the most stable form of RNA बहुत सारा डिफरेंट टाइप रो आरएनए अछि से भितरो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए हमें कहा के कहमा दैट इज योर राइबोसोमल आरएनए के कहमा ओके दैट इज क्वाइट स्टेबल रहसी ओके बट अदर आरएनए दैट आर मोर रिएक्टिव बट दिस आरएनए दैट इज हेत के रिएक्टिव नो है बिकॉज़ दैट इज द पार्ट ऑफ योर राइबोसोम रो भितरे रहू छै इट इज नॉट floating inside the cytoplasm रे RNA माने फ्री रे नै बोल पर दे आर द पार्ट ऑफ योर राइबोसोम दैट्स व्हाई दीज आर मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ RNA काहे के कोस मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ RNA दैट इज योर राइबोसोमल RNA क्वेश्चन ऐसी यू हैव टू रिमेंबर दिस ओके 1 मार्क रा क्वेश्चन आसी पारे ओके जस्ट वेट okay next time discussion karma that is your different types of ribosome हमें देखना हमें राइबोसोम जेतले देखुचुन दुईटा टाइप रो राइबोसोम अछि हमर पाखे गोटे हला 70s टाइप राइबोसोम and another one that is your 80s type ribosome गोटे 70s टाइप राइबोसोम अछि आ गोटे 80s टाइप राइबोसोम प्रेजेंट अछि 70s एंड 80s रो भितरे डिफरेंस काना देखो जतले राइबोसोम देखुछु ताके हमें दुईटा कैटेगरी डिवाइड कला 70s आ गोटेला 80s इचा करे 70 माने काना s माने काना 80 माने काना s माने काना जानबा देखो इचा करे s माने काना S होचे दैट इज द राइबोसोम और कैन से बी मॉलिक्यूल्स ना से कैन से बी सब्सटेंस ना ताके मापबार लगी ओके तार साइज डेंसिटी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस करी ताके गोटे यूनिट द्वारा मापा जाय
से यूनिट के क्वेश्चन में काम लिखे दैट इज कॉल्ड सेडवर्क यूनिट, सेडवर्क यूनिट, और इता के कहा जैसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रो माने काना देखो कैंसी भी मॉलिक्यूल सामान नेला कैंसी भी किछटा स्ट्रक्चर नेला ताके मैं काना कला देखो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रो माने काना भल से टिके बुझि जाओ। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और सेडवर्क यूनिट बोली के भी कहि पारमा बिकॉज़ दिस वाज फर्स्ट गिवन बाय सेडवर्क बोली गोटे बायोलॉजिस्ट ई कांसेप्टटा देथिले सेते लगी ताकर ना हिसाब से सेडवर्क यूनिट बोली के भी कहा जाय। ओके राइबोसोम के हमें मेजरमेंट करबार लगे ताके मेजर करबार लगे ताके मापबार लगे जन गोटे यूनिट यूज करछो केन यूनिट यूज करछो दैट इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और सेडवर्क यूनिट बोली के कहछो। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट माने काना देखो बुझबार के ट्राई करना जते बेला हमें कैंसी भी स्ट्रक्चर के गोटे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे पका जाउछ क्या मशीन रे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन सपोज दिस वन दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हला देखो हमें पाथोलैब जाइतमा समझते पाथोलैब जेतले हम ब्लड टेस्ट करबार अछि कि काना करबार अछि हमें पाथोलैब के जदी जिमा सेन गुटा हमर एंता मशीन टे लागितसे ओके जदी तुमको अपॉर्चुनिटी मिलु छे यू कैन गो टू द एनी पाथोलैब नियरेस्ट कैंसी भी पाथोलैब के जीवो एंसन सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन केनटा बोली के पचराबो या फिर तुमर इंस्टीट्यूट रे भी अवेलेबल थिबा मोस्टली समस्त घर कॉलेज रे अवेलेबल थिबा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे काना करा हेसी जे हमर सपोज धरनियो हमें गोटे मिक्सचर नेला ओके इन हमें मिक्सचर नै छु डिफरेंट टाइप रो मॉलिक्यूल्स हमें इन सपोज नै छु डिफरेंट टाइप रो स्ट्रक्चर्स हमें ना ओके इटा गोटे टाइप रो स्ट्रक्चर ना एंड इटा गोटे टाइप रो सब्सटेंस ना दुईटा टाइप रो मानकर सब्सटेंस नै छु okay but we want to separate these two substance suppose ita substance a dela ita के ना substance a green टा के दला a और yellow के दला हम मन कर b दला इते के दला b but we want this two substance in separate way इमन को सेपरेशन करबार के चाहबा ओके इनो काना আছে मिक्सचर আছে ई मिक्सचर रो हमको काना करबार छे both have to separate them okay हमको काना करबार के पड़बा we have to perform centrifugation हमको इनो काना परफॉर्म करबार के पड़बा centrifugation परफॉर्म करबार के पड़बा एंड centrifugation रे काना करा जिबा देखो centrifugation रे काना करा जैसे हमें एते के काना करला इथरे पके देला टोटल जतकी भी मिक्सचर अछि मिक्सचर के हम इनो पके देला ओके एंड गुटे साइड रे जतकी भी हमें मिक्सचर ना आरो साइड रे सेम अमाउंट रो हमें न मिसे दमा वाटर सेम लेवल रे बैलेंस करबार लेके दुई साइड के नै गला हमें न वाटर दुईटा समान अछि जतले इतर स्विच ऑन कर दिया जिबा ई मशीन रो स्विच ऑन जतले कर दिया जिबा इनो लागि छै गुटे रोटेटर लागि छै ओके ई रोटेटर घुरबा रोटेटर जते बेले घुरबा ई टेस्ट माने भी का करबे दुई साइड रे माने भी का करबे घुरबे जते बेले सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे हमर काना करछे रोटेशन जते बेले हेबा सेन हमर काना हबा सेंटर रो मॉलिक्यूल्स मानकर ऊपर काना पड़बा गोटे फोर्स पड़बा सेंटर रो मॉलिक्यूल्स मानकर ऊपर काना पड़बा गोटे फोर्स पड़बा एंड से फोर्स के कहै हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ताके कहू हमें काम बोली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जेतले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़बा कहार ऊपर ए जन डिफरेंट सब्सटेंस भी जन देचो डिफरेंट सब्सटेंस इमनकर ऊपर काना पड़बा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़बा एंड ड्यू टू दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमर काना हबटा स्टार्ट हबा ए जन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स समना सेटल डाउन हबटा स्टार्ट करबे सेटल डाउन माने काना तले बसी जिबाटा स्टार्ट कर तो हमर किछि टाइम घरे साला परे हमें देखला सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे काना हितबा देखा ओके किछि टाइम रोटेशन हला परे हमर इजन मॉलिक्यूल्स माने अछन
ये मॉलिक्यूल्स माने काना करले तले सेटल डाउन करी गले बट इनो काना देखबार के मिलला देखो इंपोर्टेंट थिंग्स इज हियर जब इन मिक्सचर नहीं थिला बट मिक्सचर रे सब मॉलिक्यूल्स जे जे जगह रे थिले फ्री रे बुलुथुले बट सेंट्रिफिकेशन कर देला परे काना हला इमान कर दुईटा लेयर क्रिएट हे गला तले बसी गला किए दैट इज योर मॉलिक्यूल बी एंड ऊपर बसी गला ए तले रह गला के बी एंड ऊपर रह गला के ए का हला जे हमर जतले सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पड़ला सेंट्रिफ्यूगल फोर्स समस्त सब टाइप रो मॉलिक्यूल ऊपर समान सेंट्रिफ्यूगल फोर्स नहीं पड़बार एंड केते कहार ऊपर केते लेवल रो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पड़बा कहार ऊपर डिपेंड करूछे that depend upon the size of the molecule that depend upon the density of the molecules that depend upon the shape of the molecule हो कि नहीं तो जहार ऊपर हमर जनी सब मॉलिक्यूल्स ऊपर डिफरेंट अमाउंट रो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पड़ला तो इन हमर दुईटा टाइप रो मॉलिक्यूल्स थिला दुईटा टाइप रो सब्सटेंस हेतु थिला तो जेन हिसाबे मनकर ऊपर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पड़ला तो से माने से हिसाबे काना करले दे आर नाउ सेटल डाउन एट द बॉटम ओके तो हमर नो किछि टाइम गला पर जेतले देखला जे किछिटा तले बसी गले किछिटा तार ऊपर बसी गला माने पहला के सेटल डाउन हला बी पहला सेटल डाउन हे गला ओके बट इता के अधिका टाइम लागला कहा के अधिका टाइम लागला ए के ओके ई भितरु के पहला सेटल डाउन हे गला पहला तले के बसी पड़ला दैट इज योर बी बसी पड़वा माने काना सेडिमेंट फास्ट सेडिमेंट माने काना बसी जीवाटा सेडिमेंट फास्ट ई पहला बसी गला ओके एंड ये पछा बसला सेडिमेंट लेटर तो इन नंबर how quickly a particular molecule is settled down or sediment when we perform the centrifugation that is called as sedimentation coefficient जते बेला में centrifugation करूछु ओके how quickly a particular molecules that is settled down at the bottom that is called as what sedimentation coefficient केते टाइम लागु छै वी कैन से दैट नॉट प्योरली टाइम कहि परमा जे केते वेलोसिटी लागु छै कहा के अधिका टाइम लागु छै कहा के कम टाइम लागु छै जहा के अधिका टाइम लागु छै से पछे बसु छै जहा के कम टाइम लागु छै से आगो बसी जाउ छै ओके नि तो इनो देना गला जे जेन माने टिके हेवियर अछन जेन मानकर साइज टा टिके लार्जर रहला से मानकर वेट अधिका रहला डेंसिटी अधिका रहला से माने पहला बसी जाउ छै ओके नि एंड किछटा मॉलिक्यूल जन माने टिके लाइटर वेट रहले से मानकर साइज स्मॉलर रहला डेंसिटी कम रहला से माने पछे बसु छै इमेजिन करो सपोज हमें काना करछु फोर्स पकोछु तो हमर बड़ मॉलिक्यूल्स जदी अछि बड़ साइज रो मॉलिक्यूल अछि सेते के हमको काना लागु छै इनके फोर्स पकावार पड़ु छै बट जल्दी से काना करि जाउ छै सेटल डाउन करि जाउ छै एंड ई धीरे धीरे सेटल डाउन करु छै बिकॉज़ दैट इज स्मॉलर साइज रो मॉलिक्यूल ओके तो ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स रो लागी देन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थिले दे आर सेटल डाउन एट अ डिफरेंट रेट कितने रेट रे दे आर सेटलिंग डाउन ओके और हाउ फास्टर they are settled down at the bottom during sedimentation or during centrifugation ताके कहू हमें काम करेंगे sedimentation coefficient okay so what is that sedimentation coefficient sedimentation coefficient रो माने how quickly or at which rate a particular molecule is sediment at the bottom during centrifugation that is called as sedimentation coefficient ओके केते रेड रे जाइकर से बस जाउ तो हमर काना कला राइबोसोम नेला दुईटा टाइप रो राइबोसोम देखबार के मिलला सपोज दिस वन दैट इज योर राइबोसोम इटा हला सपोज माने कर दिस वन दैट इज योर 70s टाइप राइबोसोम एंड दिस वन दैट इज योर 80s टाइप राइबोसोम ओके
गोटे 70s टाइप राइबोसोम और गोटे 80s टाइप राइबोसोम दिस वन दैट इज योर 80s टाइप बी टा जेंटा थिला हमर काने दैट इज योर 80s टाइप एंड ए टा जेंटा थिला दैट इज योर 70s टाइप ओके इनो काने जना पडुछे केनटा हेवियर दैट इज योर 80s टाइप राइबोसोम दैट इज द हेवियर राइबोसोम heavy size ribosome ठीक है larger size ribosome but 70s type ribosome that is smaller size ribosome that's why that is taking more time to sediment पहला अधिका टाइम कहा के लागला हमर ए के अधिका टाइम लागला सेतले के से पछा बसुचे राइट बट बी के हमको जे टाइम देखमा बी के कम टाइम लागला सेतले पहला बसी जाई छे पहला बसी जे हमने कम टाइम लागि छे ओके टाइम तो हमें कहि नै पारो फास्टर जे देखमा अधिका फास्ट रे के जायकरी बसी गेला दैट इज योर 80s टाइप राइबोसोम इ जगह रे s रो वैल्यू दिया है 10 टू द पावर -13 सेकंड ओके s के में वी कैन कैलकुलेट दिस इन सेकंड बट इ जगह रे सेकंड माने इ जगह रे पूरा प्योरली जो देखमा डायरेक्टली दिस इज नॉट द टाइम इट होचे रेट वन टाइप रो वेलोसिटी कहि परमा कि केते स्पीड रे बसु छे इता के 80s टाइप राइबोसोम that took 80s टाइम और 80s स्पीड रे जाई से बसु छे इन इता के केते टाइम लागु छे 70 into 10 to the power -13 सेकंड कहि परमा एन 80s रे माने काना 80 into 10 to the power -13 सेकंड बोली कहि परमा ओके बिकॉज़ 1s रो वैल्यू दिया है दैट इज 10 to the power -13 सेकंड 80s माने काना जे 80 into 10 to the power -13 सेकंड स्पीड रे से जाई बसु छे एतकी स्पीड रे जाई से सेटल डाउन करू छे एनी ई एतकी स्पीड रे जाई काना करू छे सेटल डाउन करू छे तो के अधिक स्पीड रे सेटल डाउन करू छे 80s टाइप राइबोसोम के कम स्पीड रे सेटल डाउन करू छे 70s टाइप राइबोसोम है ना तो 70s टाइप राइबोसोम के जो स्पीड देखमा स्लो अछि एंड इतर स्पीड देखमा फास्टर अछि तो फास्टर किए बसला 80s टाइप राइबोसोम ओके इता जदी देखमा इतर सेडिमेंट जेतले देखमा सेडिमेंट दैट फास्टर एंड इतर सेडिमेंटेशन जेतले देखमा दैट सेडिमेंट स्लो सेडिमेंट हला बट ये फास्टर सेडिमेंट हला ओके तो सेडिमेंट के फास्टर हबा और के स्लो हबा कहार ऊपर डिपेंड करछ दैट डिपेंड अपॉन द साइज ओके तो इता जदी हम देखमा साइज तार शेप एज वेल एज डेंसिटी तार सब ऊपर डिपेंड करछ तो लार्जर साइज रो राइबोसोम अच्छे गोटे स्मॉलर साइज रो राइबोसोम अच्छे ओके इतर साइज टिके काना अच्छे छोट अच्छे एंड इतर साइज टिके काना अच्छे लार्जर अच्छे सो दैट इट इज टेकिंग very less time to sediment but it is taking more time to sediment okay more time लागला कहा के 70s स्पीड रे जाउछ सपोज धरि ना बाइक रे जाउछ जने बाइक रे 30 किलोमीटर पर आवर रे जाउछ और जने 60 किलोमीटर पर आवर जाउछ के फास्टर जाउछ 60 ओके जने 60 रे जाउछ जने 30 रे जाउछ के फास्टर जाउछ 60 वाला फास्टर जाउछ just like that इस जगह रे गोटे 80 रे जाउछि आ गोटे 70s रे जाउछि के फास्टर गला दिस वन दैट इज फास्टर मोबी कला तो राइबोसोम के सही हिसाब में हमें डिवाइड कला और कैसे भी मॉलिक्यूल के हमें डिवाइड करि पारमा ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन हाउ फास्टर और हाउ क्विकली ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज सेडिमेंट जतकी क्विकली सेडिमेंट करछे तार सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट सेतकी अधिक हवा ओके इनो के क्विकली गला दैट इज योर 80s टाइप राइबोसोम पहला बसला केते स्पीड रे बसला 80 into 10 to the minus 13 सेकंड रे बसला बड़ी केते स्पीड रे बसला 70 into 10 to the minus 13 सेकंड रे बसला माने स्लो के गला दिस वन इज स्लो एंड दिस वन इज फास्टर ओके एंड जे फास्टर जे करी बसुचे मोस्टली साइज जे देखमा दैट इज योर लार्जर साइज एंड दिस वन दैट इज योर स्मॉलर साइज तो हमर 70s टाइप और 80s टाइप राइबोसोम रो कंपैरिजन जते बेले करूछु 70s टाइप राइबोसोम and 80s type ribosome comparison jodi karma this one that is smaller size ribosome this one is your smaller size ribosome and this one is your larger size ribosome okay and ribosome means ribosome रे RNA अछि and protein अछि okay नहीं तो इनो भी हमें देखमा जते बेले इतर पखे काना अच्छे
they are having the गोटे smaller subunit अच्छे गोटे larger subunit अच्छे. Okay, this one that is the smaller subunit. And this one that is your larger subunit. Okay, here also गोटे larger subunit और गोटे smaller subunit अच्छे. This one that is your larger. Sorry. And this one is your larger subunit. Okay, तो इन नंबर काना अच्छे प्रोटीन अच्छे एंड योर आरएनए अच्छे ना आरएनए प्रोटीन अच्छे देखो काना काना राइबोसोमल आरएनए किन किन टाइप रो राइबोसोमल आरएनए अच्छे दैट वी हैव टू डिस्कस हियर. ओके एबे देखमा अमर स्मॉलर सबयूनिट और लार्जर सबयूनिट दुईटा जनरली दे आर सेपरेट कंडीशन रहतसन जनरली माने सेपरेट थसन बट मन को जदी जॉइन करामा तो मन को जॉइनिंग कर लगे देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम आयन. ओके फॉर द जॉइनिंग ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर सबयूनिट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ योर मैग्नीशियम आयन. क्वेश्चन इज सी the larger and smaller subunits of the ribosome that are joined by which ion that is your magnesium ion. एबे देखमा हमर larger and smaller subunit रे हमें जते बेले देखुछु इनो काना अच्छे आरएनए अच्छे इनो जन आरएनए अच्छे ई आरएनए के कहूछु हमें काम लिखरी this one that is your इते के कहला में दैट इज योर 16s आरआरएनए. इट हला केन आरएनए 16s आरआरएनए 16s माने काना 16 into 10 to the minus 13 सेकंड स्पीड रे जाई कर सेडिमेंट करबा जदी हमें ई आरएनए के नेकरी सेंट्रीफ्यूगेशन कराला दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड 16s आरआरएनए. एस रो माने काना एंड 16 माने काना ई जगह में तुमको टिके आगरो कहली 70s 80s विद डिफरेंस काना हैला तारा गुरु जस्ट वेट हमर जने स्मॉलर सबयूनिट लार्जर सबयूनिट अछि टिके आगरो कहली जे दे आर सेपरेट कंडीशन रे थिसन यदि सेपरेटली तके में नमा स्मॉलर सबयूनिट के और सेंट्रीफ्यूगेशन करामा इतके लग से 30s केते स्पीड रे जेकर सेडिमेंट करबा 30s बट ई इतके लग से केते s इतके लग से 50s. ओके इतके 30s लग से इतके 50s लग से बट दुईटा के मिसे कर सेंट्रीफ्यूगेशन कराले दुईटा के मिसे कर सेंट्रीफ्यूगेशन कराले केते एस लागु छे 70s. ओके दुईटा के मिसे करी जतले मैग्नीशियम आयन रो प्रेजेंस रे दुईटा जॉइंट अछन से टाइम रे सतके सेंट्रीफ्यूगेशन करूछु सतके केते स्पीड रे जेकर सेडिमेंट करूछु 70s स्पीड रे जेकर सेडिमेंट करूछु बट दुईटा के सेपरेट कर देले एतके 30s लागु छे एतके 50s लागु छे कंफ्यूज ना हेबो इन 50s और 30s होचे 50s 30s के मिसाले तो 80s हबार कथा नाही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के टिके घर कहलु डिफरेंट मॉलिक्यूल ओके के हिसाबे अछि तार साइज डेंसिटी समस्त को ऊपर डिपेंड करूछि इधर के सेपरेट नहीं करी सेंट्रीफ्यूगेशन करा गला 30s लागला इधर के सेपरेट नहीं करी सेंट्रीफ्यूगेशन करा गला 50s लागला बट जॉइन करी करी जतले निया गला इधर के लागला 70s दैट्स दैट इज 70s. ओके दुईटा के मिसे करी ना बाहर करा हो जेंसी भी मॉलिक्यूल नला सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे पकला हाउ फास्टर दैट इज सेटलिंग डाउन तार ऊपर डिपेंड करछन से टाइमिंग के कंसीडर करी करी हमें तके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट तार बाहर करू छु. ओके तो इनो स्मॉलर सबयूनिट दैट इज 30s स्मॉलर सबयूनिट रे काना होचे गोटे 16s आरआरएनए होचे. ओके एंड तार संगे प्रोटीन्स माने होचे अप्रोक्सीमेटली 21 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होचे इनो जन प्रोटीन माने होचे ओके इन प्रोटीन अछि केतेटा टाइप रो प्रोटीन्स अछि 21 प्रोटीन्स. ओके सेंता हमें जदी देखमा 80s टाइप राइबोसोम
80s टाइप राइबोसोम रो तर स्मॉलर सब यूनिट रो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हला 40s एंड लार्जर सब यूनिट रो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हला 60s दुटा के जॉइन करिथिले they are taking 80s time but this one 70s right but separate 40s और 60s दुटा के मिसाले तो 100s हबार कथा ना दुटा के जॉइन करि करि नले that is taking 80s time ओके तो एबे हमें देखमा इनो भी काना अछि राइबोसोमल आरएनए अछि बट इनो जन राइबोसोमल आरएनए थिला दैट इज 16s थिला बट इनो जन राइबोसोमल आरएनए अछि दैट इज 18s इनो जन राइबोसोमल आरएनए थिला दैट इज योर 18s आरएनए ओके एंड जदि हमें देखमा ई 16s RNA जो देखमा RNA that is made up of nucleotides RNA that is made up of what nucleotides तो इतर नो केतटा न्यूक्लियोटाइड्स अछि 16s RNA रे नो जे न्यूक्लियोटाइड्स माने राइबो न्यूक्लियोटाइड्स माने जॉइन हितिबा ना तो इनो केतटा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स अछि इने देखमा 1500 न्यूक्लियोटाइड्स अछि 1500 of nucleotides they are joining to make the RNA किन RNA that is your 16s RNA but 18s RNA जतले देखमा here there is presence of 2000 nucleotides 2000 nucleotides 2000 टा nucleotides प्रेजेंट अछि हमर 80s टाइप राइबोसोम रे ओके तापरे हमें गल्ला नेक्स्ट गल्ला हमें केन के दैट इज योर लार्जर सब यूनिट देखो इना लार्जर सब यूनिट रे भी काना अछि आरएनए अछि तो इनो जन आरएनए अछि दिस वन ओके इट हला 23s आरएनए ओके 23s आरएनए इनो अछि एंड इनो भी गुटे लार्जर आरएनए अछि दैट इज 28s आरएनए अछि okay and this 23s RNA that is having 3000 nucleotides but here इतर पाखे होचे 5000 nucleotides okay इतर पाखे 3000 टा nucleotides and इतर पाखे केतरा nucleotides that is your 5000 nucleotides present अछि okay just wait a second okay तापरे हमें देखमा जदी इन केस ऑफ प्योर हमर 50s लार्जर सब यूनिट 70s टाइप राइबोसोम रे जे देखमा इनो आ गुटे आरएनए प्रेजेंट थिसे दैट इज द 5s आरएनए ओके इनो आ गुटे आरएनए अछि तके कहला 5s आरएनए ओके एनी 5s आरएनए रे जे देखमा केतेटा न्यूक्लियोटाइड्स अछि देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली 120 न्यूक्लियोटाइड्स 120 न्यूक्लियोटाइड्स ओके एंड इनो भी हमर अछि गुटे 5s आरएनए इनो भी अच्छा हमर काना 5s RNA okay this is also 120 nucleotides okay तो इतो तुमको मन रखबार अछि जे which RNA that is the common RNA between the your 70s type ribosome 80s type ribosome देरा कॉमन रहला 5s RNA दुही न प्रेजेंट अछि दुही लार्जर सब यूनिट रे बट इतर लार्जर सब यूनिट रे another RNA present is C that is 5.8s 5.8s rRNA 5.8s rRNA माने काना जे that will take 5.8s timing during the time of centrifugation and 5.8s RNA रे जो देखमा there is presence of how many nucleotides there is presence of 180 nucleotides okay
एंड इनो हमर प्रोटीन थिला ना इनो प्रोटीन अच्छे इनो जन प्रोटीन्स अच्छे इनो थिला हमर 21 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड इनो अच्छे हमर 33 प्रोटीन्स ओके एंड इनो हमर भी प्रोटीन अच्छे एंड इनो किन प्रोटीन अच्छे इनो there is presence of 30 different types of proteins the larger subunit re okay and here also there is presence of protein and you know ketata type of proteins hoche 49 different kinds of proteins are there okay you know hoche 49 proteins okay so this is your राइबोसोम 70s टाइप राइबोसोम 80s टाइप राइबोसोम 70s टाइप राइबोसोम हमें जितले देखुछु 70s टाइप राइबोसोम रे दुईटा सब यूनिट रहला गुटे हला 30s स्मॉलर सब यूनिट एंड 50s लार्जर सब यूनिट हमर इना देखला जे दैट इज योर 40s स्मॉलर सब यूनिट 60s लार्जर सब यूनिट अनदर डिफरेंस जे हमर 30s स्मॉलर सब यूनिट रे देयर इज प्रेजेंस ऑफ 16s आरआरएनए इनो प्रेजेंट होचे 18s आरआरएनए इनो प्रेजेंट होचे हमर लार्जर सब यूनिट जेतेले देखला देयर इज प्रेजेंस ऑफ 23s आरआरएनए इनो प्रेजेंस है 28s आरआरएनए इनो प्रेजेंट होचे हमर 5s आरआरएनए इनो भी प्रेजेंट होचे हमर 5s आरआरएनए बट इनो एक्स्ट्रा रहला 5.8s आरआरएनए देन इधर स्मॉलर सब यूनिट 21 प्रोटीन्स इनो 33 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन इनो रहला हमर काना दैट इज योर 30 proteins but here there is your 49 proteins that is the difference between your 70s type ribosome and 80s type ribosome and these are the different kinds of ribosomal RNA or rRNA which are present in the ribosome तो केतेटा टाइप रो rRNA हमें देखबार के पाइला राइबोसोम रे 70s टाइप राइबोसोम रे देखबार के पाइला 1 2 3 1 2 and 3 and 80s टाइप राइबोसोम रे देखबार के पहला this one 1 2 3 4 चारटा देखबार के पहला ओके तो हमर 70s टाइप राइबोसोम केनु देखबार के मिलसी 70s टाइप राइबोसोम फर्स्ट ही देखबार के मिलसी दैट इज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल okay that is found in the cytoplasm of prokaryotic cell okay and how can देखबार के मिलसी that is in the mitochondria and chloroplast how can देखबार के मिलसी mitochondria and chloroplast रे देखबार के मिलसी okay mitochondria जतले suppose this one that is your mitochondria है माइटोकॉन्ड्रिया रो तार जन मैट्रिक्स रहला तार जन सेमी फ्लूइड रीजन रहला ई जगह रे जे देखमा इनो भी हमर राइबोसोम देखबार के मिलस ओके एंड जदी क्लोरोप्लास्ट हला सपोज दिस वन इटा मन कर क्लोरोप्लास्ट हला ओके इनो भी हमर काना छै राइबोसोम अछि बट केन टाइप रो राइबोसोम दैट इज 70s टाइप राइबोसोम ओके and 80s type ribosome केनो देखबार के मिलसी this is only found देखा गुटे जिनिस मन रखि तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट केनो देखबार के मिलसी that is in your eukaryotic cell माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कहां देखबार के मिलसी प्रोकैरियोटिक सेल रे तो नहीं था eukaryotic सेल रे थी तो 70s टाइप राइबोसोम पहला साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल रो साइटोप्लाज्म रे देखबार के मिलसी तार संगे जदि यूकैरियोटिक सेल देखमा यूकैरियोटिक सेल रो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट देखबार के मिलुछि सेंता 80s टाइप राइबोसोम दैट इज फ्रीली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल रो साइटोप्लाज्म रे ओनली देखबार के मिलसी 80s टाइप राइबोसोम दिस इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोटिक सेल टोटली नहीं ना but 80s type ribosome that is present in both prokaryotic and eukaryotic cell prokaryotic cell ro cytoplasm re 70s eukaryotic cell ro cytoplasm re 80s and eukaryotic cell ro chloroplast or mitochondria re 70s type ribosome देखबार के मिलस राइट एटा गला हमर काना दैट इज योर राइबोसोमल आरएनए बाबत रे हम डिस्कशन कला ओके तो नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करमा दैट इज ऑल अबाउट योर टीआरएनए लास्ट आरएनए डिस्कशन करमा नेक्स्ट क्लास रे ओके Thank you. If any doubt, you can write to us. Our chat box is open for all of you. And for the handwritten notes, you all have to join our
nucleotides application जेन माने nucleotide application download नुहे करताली you all are requested to download our nucleotide application and enjoy all the lectures as well as your handwritten notes written by me. Thank you.